are now acting as a support zone. तो मुझे लग रहा है यहाँ पे IT index could still continue moving higher, but the speed could now reduce here. So मतलब इतना भी आप ओवर एक्सपेक्ट मत करिएगा कि जो स्पीड से अभी तक बढ़ा है वही स्पीड से ज्यादा आगे बढ़ पाएगा. Another space which deserves a mention here is the Nifty Pharma Index. Now pharma stocks में भी बहुत अच्छा momentum है. अब देखिए Granules देखिए, Divi's Lab, Sun Pharma, Dr. Reddy. Now all these stocks have really outperformed in the last several sessions, and that is the reason Pharma Index has grown from strength to strength. And if you see the daily charts, the weekly charts, they are all hinting at an seminal upside in the next few weeks. So here this index, rather than being a defensive index that has become a market outperforming index, then I feel this outperformance here could continue. अब एक ये देख लीजिए, आई गेस द नेक्स्ट इंडेक्स दैट वी शुड बी लुकिंग एट इज द निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स. तो एफएमसीजी में मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है. थोड़ा I feel there is some scope of a sideways consolidation here, because we are seeing some selling pressure in ITC at higher levels and HUL में buying हो रहा है. So within the sector there are stocks which are nullifying the moves of each other, and that is the reason मुझे लग रहा है कि एक बार for the next few days we could see some consolidation. But despite that, now HUL अच्छा लग रहा है, कोलपाल में एक अच्छा मोमेंटम है, so ride that momentum, and we have been regularly sharing these stocks in the previous webinars also. CNX Auto kind of a sideways momentum, जो speed of the up move था, या जो वॉलेटिलिटी आप कहिए कि जो रेंज एक्सपेंशन ऑन द अपसाइड हुआ था, उसके बाद ये पिछले 10 दिन में इट हैज गॉन इनटू अ कंसोलिडेशन फेज. बट 26,100 26,150 के ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है. सो वॉच आउट फॉर दैट ब्रेकआउट एंड डू नॉट प्रीएम्प्ट राइट नाउ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि markets might spend some time here consolidating before making the next up move, so that at least there is some kind of a time wise correction rather than a price wise correction. Real estate index also not doing that bad. By last 7-8 days it was on a down move, but overall मुझे लग रहा है कि ये अपना जो 20-day exponential moving average है आज उसी के आसपास से support ले रहा है. तो 1000 levels would now act as an important support zone for real estate index. So let me just repeat once again what we have shared with respect to Nifty. Nifty में buy on dips रखिए 25,040, 25,050 from an intraday perspective is a very good support. We see levels closer to 25,130, 25,140 on the upside. Bank Nifty could outperform from here on, because if you look at ICICI Bank, if you look at a couple of other private banks, मुझे ऐसा लग रहा है कि Bank Nifty में एक out performance यहाँ से आ सकता है, which could be led by the private bank index and especially ICICI Bank, which we discussed also on the charts. तो मुझे लग रहा है ये सारे spaces पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए. And overall Bank Nifty के levels if we see, then 50,800 will act as an important support. And on the upside 51,800, 52,000 can be witnessed. And positionally Nifty, if you see, 24,800 will now act as an important support. Until 24,800 holds, we could see this up move extending up to 25,400. So that's about it from my side. Can we Abhishek, we could start the Q&A session. So if there are any questions, we could take them. First, there is a message by Mr. Sabia Sachi. Good morning, sir. Very eagerly waiting for your Nifty Expiry Analysis. Thank you so much, Sabia Sachi ji. Every time you have been a regular listener, you have been a very, very regular follower, and thank you so much for your love and affection. It is really helpful in Nifty option trading. Last expiry you told one could go along with this stop loss for a target of 25,200. Yes, Sabya Sachi ji, last week लग भी रहा था क्योंकि जो सबसे ग्लोबल मार्केट्स में रिबाउंड आया था, हमारे मार्केट्स ने प्रीवियस वीक में इतना बड़ा रिबाउंड नहीं दिया था, and the setup was quite good. So that's why we were more confident. Now here what we are doing is we are expecting the markets to consolidate for the next couple of days, and then let's take it ahead in the next week. And positionally, as I said, 24,800 should now act as a trailing stop loss, which earlier was your entry point.
GR Infra, Uniparts and GR Infra. GR Infra is on a downtrend now. If you see, it has broken down all its important moving averages. The stock had moved up sharply from 995 to 1800 almost, and now we are seeing a correction. But I feel now 1400, 1430 will now act as an important support for GR Infra, and we should see the stock holding these levels and then consolidate. Nilay Parekh is India Pesticides Limited, technical chart. नीले जी, आई फील द स्टॉक इज स्टिल ऑन द डाउन ट्रेंड. बड़ा रिवर्सल, अभी तक कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं आया है. एंड आई मुझे ऐसा लग रहा है कि 240 के ऊपर जब जाएगा तभी आपको एक अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक में मिल सकता है. अदरवाइज आई फील वन शुड जस्ट वेट फॉर अ डे और टू. Ram Mohan Rao ji is asking about Tata Elxsi now. Yes, what a mover it has been in the last several sessions. From say I guess Monday and Tuesday, the stock moved from 7100, almost 7100 to uh, 9000 levels. So it's a staggering around 20-25% returns. But yes, post that there has been some selling pressure from higher levels. But overall, I feel 7600 would now act as an important support. 7600, 7650, which was the closing of last Monday. सो वो जो लेवल है 7600, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अब बन जाएगा आने वाले कुछ दिनों के लिए. मानस जी इज आस्किंग अबाउट एस्कॉर्ट्स कुबोटा. मानस जी, एस्कॉर्ट्स में थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम बन रहा है. इट्स काइंड ऑफ अ टॉपिंग आउट ये एट विद पोस्ट दिस कंसोलिडेशन. तो लोअर टॉप्स तो बन ही रहे पिछले 3-4 महीने में. आप जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त ये देखिए तो लोअर टॉप्स बन रहे. बट फॉर दिस पैटर्न, एटलीस्ट फ्रॉम इफ यू आर अ ट्रेडर, तो आप 3950 के ऊपर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. बट जब तक 3950 नहीं क्रॉस करता है तो देर आर चांसेस दैट 3760, 3730 can get retested. Sahadev ji is asking IndusInd Bank. इंडसइंड बैंक नथिंग ग्रेट. चार्ट कुछ इतने ग्रेट नहीं है. मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आएगा. अगर प्रीएम्प्ट करके भी बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है 1380, 1390 विल नाउ एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट. एंड मैक्सिमम द करंट रैली कुड एक्सटेंड अप टू 1465, 1480. अगर ये 1480 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो जाता है देन यू वुड सी अ बिग अप्रूव, बिकॉज दैट वुड इवन मीन बैंक निफ्टी क्रॉसिंग 51,400, 51,500 एंड सस्टेनिंग देयर. So this will be in tandem with Bank Nifty, and overall I feel बड़ा move तभी आएगा जब IndusInd Bank crosses and sustains above 1480 levels. Prashik Borkar is asking about BSC. BSC, the charts are quite decent. I feel post that up move till in April it was till 3260. The stock corrected, it retested its 50-day moving average, and then now we are seeing this up move. So I feel overall the stock is doing good. Uh, Even despite all these consultation papers regarding derivatives, which could potentially impact BSC, but the stock is still doing fairly good. So if someone is holding it, please hold it with a stop loss at 2650, 2645 zone, which is the last 8 to 10 session low of the last 8 to 10 sessions. So I feel that it would be a sufficient stop loss on the downside. हरीश जी इज आस्किंग अबाउट एनएमडीसी एंड मेटल एज अ सेक्टर. हरीश भाई, मुझे लग रहा है कि आप मेटल के बारे में अगर हम चार्ट पे भी देख लेते हैं तो एक निफ्टी मेटल्स का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ. यस,
Now if you see metal charts, it is slanting downwards, थोड़ा momentum lose हो रहा है. There was this fall up to 87 8800, but recovery भी आया हुआ है 9400 तक. And in the last 3 days, once again 9450 9470 is zone is not active, is not, this zone is not being able to get crossed. So I feel यहाँ पे थोड़ा resistance है, एंड 9500 के ऊपर ही अब फ्रेश अपसाइड होगा. तब तक आई इट कुड कंसोलिडेट हियर. द ओनली factor which is going in favor of metal stocks is the dollar index, which is right now at 100.50. So falling dollar index always is beneficial for the metal stocks. So overall, but however, looking at the scenario in the last few days in the index itself, मुझे ऐसा लग रहा है इट इज बेटर दैट हम मेटल इंडेक्स में 9500 के ऊपर क्लोज होने दें उसको, देन यू कुड टेक अप गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स. Sadev ji, you're asking about HDFC. Now there were a couple of questions on HDFC Bank. Let me just take that. See, it's kind of stagnant. Now, if you're a trader, you don't get opportunities to make money here. So yes, if you're a trader, you could exit and look out for other opportunities. Say ICICI Bank, which is moving with momentum also, and it is relatively better placed. Strength बहुत अच्छा है compared to even Bank Nifty. तो HDFC बैंक अगर आप ट्रेडर हो तो ठीक है, आप एग्जिट कर लीजिए. बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो मुझे लग रहा है थोड़ा आप उसको 50-50 कर लीजिए. अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा डालना है तो आप HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों में ये करिए. तो आपको एक में जहाँ पे मोमेंटम है वो भी मिलेगा, और HDFC बैंक में जहाँ पे सेफ्टी है, बोथ you would be able to enjoy both the worlds. So yes, we'll take the last two questions here. Uh, Indrajit Mandal ji is asking about Engineers India and Texmaco. इंद्रनील जी, इंजीनियर्स इंडिया अगर आप देखते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रिवर्सल तो कल कोशिश हो रही थी आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ डाउन ट्रेंड. बट यस, द 20-day exponential moving average which is placed around 228 now is important level to cross, and 228 के ऊपर 240 के लेवल्स इंजीनियर्स इंडिया में आ सकते हैं. The next question, the last one, would be Texmaco. Yes. Yes, the Texmaco में अगर आप देखेंगे तो ये रेलवे स्टॉक्स के लास्ट 1-1.5 महीने में थोड़ा वी हैव सीन डिक्लाइनिंग मोमेंटम इन द रेलवे स्टॉक्स. थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी देखा है, बट दैट इज आफ्टर दिस ह्यूज अप मूव. तो मुझे लग रहा है कि the stock could take support somewhere around 225 222 levels, and वहां से आपको एक अच्छा रिकवरी देख सकते हैं. तो अभी बाय ऑन डिप्स मत करिए, जस्ट वेट फॉर दिस फॉल टू कंटिन्यू. 220 225 आर अ गुड लेवल्स टू वॉच आउट फॉर. Restaurants brand Asia. Someone has just asked me multiple times, so I'm just checking. Nothing great, buddy. संजय जी, कोई ज़्यादा बड़ा एक्साइटिंग चार्ट नहीं है यहाँ पे. 116 117 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 135 तक के टारगेट्स बनते हैं, बट लेट 115 क्रॉस एंड सस्टेन. तब तक मत करिएगा. ऑन द इफ यू हैव बॉट ऑन द डाउन साइड 104 का स्टॉप लॉस रख दीजिएगा. So thank you so much, friends, for attending this session. research@sbicapsec.com is our email ID. You could write in to us. You could put any query to us, whatever you like listening. आपको और कोई टॉपिक्स पे भी अगर कुछ समझना है या एक्सपायरी के रिलेटेड भी आपको अगर पूछना है तो आप ये ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं. मेरा डायरेक्ट ईमेल आईडी है ये, तो आई वुड बी एबल टू रिप्लाई, और माय टीम आल्सो वुड बी एबल टू रिप्लाई एट द अर्लीस्ट. So thank you so much, friends, for attending this session. Thank you so much once again.